Ready? Everybody is ready? My name is Abdul Majid Shoaib. I am Abdul Majid Shoaib, Vice President Jamaat Islami in Telangana and Convener Political Committee. Jamaat Islami in Telangana's chapter has expressed its support for the upcoming state assembly elections, emphasizing a commitment to value-based politics. Following extensive discussions across the state involving local units, Jamaat members and workers engage in deliberations about candidates in their respective constituencies. After thorough local consultations and debates, the local units submitted their preferences for voting in the election. Subsequently, the political committee of Jamaat Islami Hind Telangana reviewed these opinions, formulated their recommendations and submitted them to the central leadership of Jamaat Islami Hind for approval. The announcement was made after receiving the nod from the central leadership. It is noteworthy that Jamaat Islami Hind Telangana chapter is not aligning itself with any specific political party in these elections. Once again, I like to repeat, Jamaat Islami Hind Telangana chapter is not aligning itself with any specific political party in these elections. Instead, the organization extends its support to individual candidates based on recommendations from the local units. The list of endorsed candidates is attached and it will be provided to you. Briefly, I would like to tell you that in the past United Districts of Telangana, in Adilabad, there were total 10 seats, out of which we have extended our support to Congress candidates in 5 seats and BRS candidates in 4 seats, and 1 seat is to BSP, that is RS Praveen Kumar sir. In Nizamabad, as well Nizamabad district, there were out of 9 total seats, we extended our support to 3 Congress candidates and 6 BRS candidates. Similarly, in Karimnagar, out of 13 seats, we have extended 8 Congress candidates, support to 8 Congress candidates and to 5 BRS candidates. In Medak, 3 Congress candidates and 7 BRS candidates have been supported by Jamaat Islami Telangana. In Mahbub Nagar, that is United as per Mahbub Nagar district, out of 14 seats, we have supported Congress in 9 seats and in 4 seats we have supported BRS. In Nalgonda district, 11 seats of Congress candidates, 11 Congress candidates has been supported and 1 BRS candidate. In Warangal, 9 Congress candidates and 3 BRS candidates. In Rangareddy, 7 Congress candidates and 7 BRS candidates has been supported by Jamaat Islami Telangana. In Hyderabad, we have extended support to 3 Congress candidates and 5 BRS candidates, while we have supported the 7 Majlis candidates in Hyderabad area. In Khammam district, we have extended support to 9 Congress candidates and 1 CPI candidate. So out of 119 total seats, we have extended support to 67 Congress candidates and 42 BRS candidates, 1 from BSP, 1 from CPI and 7 Majlis Ittihad al-Muslimin. Thank you. 2018, 2014 और 2018 तेलंगाना की जानिब से जामिया के अवाखिर में मुनक़िद होने वाले असम्बली इंतखाबात के मुतालिक पिछले 4 माह से गौर फिक्र का सिलसिला जारी है। इंतखाबात में तायीद के सिलसिले में सही फैसले तक पहुँचने के लिए रियासत के अवाम की राय मालूम की गई, जिसके लिए जमात इस्लामी हिंद हल्का तेलंगाना ने रियासत के तमाम अजला में फैले हुए अपने वाबस्तगार के जरिए मुख्तलिफ तंजीमी सतहों पर सर्वे कराया। मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से खड़े किए गए उम्मीदवारान और उनकी कारकर्दगी, अवाम में उनकी मकबूलियत और उनकी अहलियत का तफसीली जायजा लिया गया। इस दौरान जमात इस्लामी हिंद ने एक अवामी मंशूर तैयार किया और इस अवामी मंशूर के नुकात पर रियासत में मुकाबला करने वाली मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मज़कूरा वाला तमाम मुलाकातों और रियासत भर में फैले हुए अपने कैडर की जानिब से किए गए सर्वे और जमात इस्लामी की मुकामी इकाइयों की जानिब से तय करदा फैसलों को सामने रखते हुए रियासत की सियासी कमेटी ने हल्के की शूरा के सामने अपनी सिफारिशात पेश की। जमात इस्लामी ने हल्के की मजलिस ने इन सिफारिशात की बुनियाद पर यह फैसला किया है कि इन इंतखाबात में हम
کسی ایک سیاسی جماعت کی تعین نہیں کریں گے۔ البتہ 67 اسمبلی حلقوں میں کانگریس، 42 اسمبلی حلقوں میں BRS، 7 اسمبلی حلقوں میں مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کی تعین کی گئی ہے، جبکہ ایک اسمبلی حلقے میں CPI اور ایک اسمبلی حلقے میں BSP اور ایک اسمبلی حلقے میں آزاد امیدوار کی تعین کا بھی اخلاقی طور پہ ہم نے اعلان کیا ہے۔ اس کے سلسلے میں جیسے کہ کولہا پور کی سیٹ کے سلسلے میں ایک بات ہماری جانب سے یہ کوششیں ہو رہی ہے کہ وہاں پر بھی کسی نہ کسی حیثیت میں اخلاقی طور پر ایک آزاد امیدوار کی تعین کی جائے۔